Dear friends, compromise, communication and consistency are the three pillars to every relationship. आपस बुझामणा भाव विनिमय और निरवच्छिन्नता समस्त संपर्कर मूलभित्ति अटे। एपरि अनेक उपादेय तत्व उपरे स्थापित इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन संबंध रे ए वीडियो रे आमे अधिका जानिबा। Let me again inform my viewers that in this video lesson we will learn about interpersonal communication. Interpersonal communication रो अर्थ होछि पारस्परिक संचार बा पारस्परिक भाव विनिमय. Interpersonal communication skill is face-to-face communication. This is an important feature of interpersonal communication. Interpersonal communication होछि मुहामुही अर्थात face-to-face भावर आदान प्रदान करिबा. All forms of expressions like oral, written and non-verbal expressions can be used in the process of interpersonal communication. এই प्रकार कम्युनिकेशन रे सब प्रकार अभिव्यक्ति जथा मौखिक, लिखित और अणुमौखिक अभिव्यक्तिर व्यवहार होई पारे. I would like to explain this point in detail. What do you understand by oral expression? ओराल एक्सप्रेशन बा मौखिक अभिव्यक्ति कहले आपण कोन बुझंती कथा कहि आमे जतबेले किछि प्रकाश करू दैट इज ओराल एक्सप्रेशन बा मौखिक अभिव्यक्ति होइताय. सेहि परि किछि कथा जतबेले लेखि करी प्रकाश करू दैट इज रिटन एक्सप्रेशन. वेरी सिंपल. तबे मोर प्रश्न व्हाट इज नॉन वर्बल एक्सप्रेशन एटा बुझिबा दरकार. जो अभिव्यक्ति रे शब्द बा वर्ड्स व्यवहार हुए नाही. करेक्ट. जोटारे शब्द बा वर्ड्स व्यवहार हुए नाही दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. धरा जो रास्ता रे आपण चाली जाउछंती जने बाइक चालक को देखि आपण हाथ मारले ताको आपण किछि कहि ना. यू हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग बट ही स्टॉप्ड. से अटकी गले. दिस इज नॉन वर्बल एक्सप्रेशन. कथाबार्ता बेले आमे जो बॉडी लैंग्वेज व्यवहार करू शरीर भाषा ताको ओडिया रे कहले कथाटा टिके अखाडुआ लागिबो किंतु इंग्लिश रे कहले सेटा ठीक बुझी हुए. बॉडी लैंग्वेज जो बॉडी लैंग्वेज हमें व्यवहार करू ताहा एक प्रकार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अटे. नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपोर्टेंट टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल. एई सब एक्सप्रेशन जथा ओरल एक्सप्रेशन हो बा रिटन एक्सप्रेशन हो बा नॉन वर्बल एक्सप्रेशन गुडी को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रे व्यवहार होई थाए. वर्तमान इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन केतोटी उदाहरण दबाकू चाहिए. इनफॉर्मल चैट्स बिटवीन ए फादर एंड हिज सन बापा पुओ भितर कथाबार्ता और एन employer and an employee or a teacher and student can be examples of interpersonal communication. Similarly, staff meetings, interviews, training sessions come under interpersonal communication. Mane rakhantu, interpersonal communication can be both one way or two way. One way or two way. एको पाक्षिक होई परिबो बा दुई पाक्षिक होई परिबो. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उभय एको पाक्षिक और दुई पाक्षिक होई पारे. Another important feature of interpersonal communication is that it is both verbal as well as non-verbal. Interpersonal communication रे उभय verbal और non-verbal expression व्यवहार ही पारे. Now let me sum up the points related to interpersonal communication. ए वीडियो आरंभ रे मु कहथिल जे I am going to deal interpersonal communication. Now what are the important features? Interpersonal communication रो मुख्य वैशिष्ट्य गुडी को मु एबे आउथरे दोहरेबी मन रखंतु. First, interpersonal communication is face-to-face communication. मुहामुही. Second point, all forms of expressions like oral, written or non-verbal expression can be used in interpersonal communication. Third point, interpersonal communication can be both one way or two way. And the fourth point is informal chats, staff meetings, interviews, training sessions are examples of interpersonal communication. Dear friends, in my next video, I will deal what are the main elements of interpersonal communication. And till that, you please stay tuned with me, like, share and comment my videos. And please build a strong friendship with this teacher. Thank you very much.